Hello everyone, welcome you all to another session of Polity. M.Laxmikant. So আজি होउची फिफ्थ पार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रो फिफ्थ पार्ट और आमे कहि परिबा एटा लास्ट पार्ट प्रीवियस चारटा पार्ट अपलोड हे जाईची जदी देखि नादी देन प्लेलिस्ट रे जाईकी देखि नियंतु ठीक अछि तो আজি आमे पढिबा फिफ्थ पार्ट रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो स्टार्ट करिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़िबा पूर्वरु किछि प्रीवियस वीडियो रो 1 मिनिट रिकैप कर दोची आमे प्रीवियस क्लास रे पढिथिले ब्रिटिश गवर्नमेंट आसीथिले ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन हला ना 1919 ईयर रे गोटे रिफॉर्म हेतिला जोटा को आमे कहूछु मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ए रिफॉर्म परे आसिले 1927 रे आसिले हमरो साइमन कमिशन जो माननकु के अपॉइंट करा जायतिला 7 मेंबर्स कमिटी जो माननकु कहा जायतिला कि 1919 रो जो रिफॉर्म रो रिव्यू करिया पई आउ तांकर रिफॉर्म रो किछि प्रपोजल दबा पई तो से माने रिव्यू करिया पई जो आसीतिले साइमन कमिशन सेठी ओनली ब्रिटिशर्स थिबा हेतु इंडियन माने प्रतिवाद करथिले एवं तापरे तांको परमिशन मिलिथिला कि से माने मध्य निजे गोटा रिपोर्ट प्रस्तुत करि परिबे जोटा कि 1935 रे 35 रे कॉन्स्टिट्यूशन रे परमिट कर दिया जीवो ठीक अछि तापरे लागू हेइतला हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो देखिबा ए एक्ट रे कोन कोन थिला The act marked a second milestone towards a completely responsible government. तो second step कहीं कुहा गला ना first step हमर कोटा थिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फर्स्ट स्टेप थिला जोटा को हमें कहूतिलु responsible government ठीक अछि It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedule. तो हमर जो वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि से कॉन्स्टिट्यूशन रो मैक्सिमम पार्ट आसी छि हमर मैक्सिमम माने अधिकांश पार्ट आसी जाय छि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे कोन थिला ना 321 टा सेक्शन थिला और 10 टा शेड्यूल थिला कोन यार मेन फीचर्स थिला देखियो नंबर 1 It provided for the establishment of an all-India federation consisting of provinces and princely states as unit. Number 1 features यार थिला कि ये कौन करिवो ना गोटे all India federation तैयारी करिवो जोठी कि provinces भी थिबे और princely states माने समस्त गोटे unit हेकी रहिबे. The act divided the powers between center and units in terms of 3 list. तीनटा लिस्ट रे डिवाइड हे जेथिला पावर कोन कोन ना फर्स्ट हला फेडरल लिस्ट सेकंड वन इज प्रोविंशियल लिस्ट and third one is concurrently जोटा कि वर्तमान भी अच्छी यूनिट सेंटर लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट वर्तमान भी कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि जोटा कि हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो अना जाई छी तो कोन कोन डिवाइड करा गला फेडरल लिस्ट जोटा कि सेंटर पई लागू हैला सेठी 59 टा आइटम रहिला प्रोविंशियल लिस्ट रे 54 टा आइटम रहिला आ कनकरेंट लिस्ट जोटा कि बोथ दी जन का पई रहिला विथ 36 आइटम रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय गवर्नर जनरल वाइसरॉय को सतबेले दिया गला रेसिडुअरी पावर हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट किंतु ए जो ऑल इंडिया फेडरेशन करा जिबर जो प्रोग्राम हेइतला किंतु एटा सक्सेस हेइ पारला नाही बिकॉज़ ऑल इंडिया फेडरेशन करिया पे प्रिंसली स्टेट्स मानन को मध्ये शामिल हबार थिला किंतु प्रिंसली स्टेट्स जॉइन करिले नाही नेक्स्ट फीचर्स कोन थिला नंबर 2 फीचर इज इट एबोलिश्ड डायरची हमें पढिथिले 1919 रे लागू हेइतला सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी करा जायतिला in the provinces and introduce provincial autonomy तो किंतु ए 1935 एक्ट हिसाब रे कोन करा गला ना डायरची को एबोलिश्ड बा रिमूव कर दिया गला ता बदल रे कोन इंट्रोड्यूस करा गला provincial autonomy in its place the provinces were allowed to act as autonomous unit provinces जो माने थिले provinces मानकु autonomous बा से माने स्वयं शासित भाव रे काम करि परिए बोली घोषणा करा गला कोथि पई of administration in their defined spheres तांको जति की spheres बा तांकर जति की टेरिटरी एरिया अछि सेही भितरे से माने autonomous administrative शासनटा करि परिबे moreover the act introduced responsible government in provinces that is the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature this came into effect in 1937 and was discontinued in 1939 तो ए जो एक्ट हला ताको इफेक्ट हला केबे 1937 रे पुनी थरे अगेन 1939 रे डिसकंटिन्यूड हे गला then feature number 3 is it provided for the adoption of diarchy at the center जो diarchy को एठी रिमूव कर दिया हेतिला ता बदल रे अणा हेतिला provincial autonomy features number 3 रे माबा आउ कोन एठी करा गला ना diarchy include करा गला
किंतु को जगह रे हमर ओनली सेंटर रे consequently the federal subjects were divided into reserved subjects and transferred subject. However, this provision of the act did not came into operation at all. किंतु ए act operation को आसिला नहीं. It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Bicameralism कोठी include करा गला 11 provinces हमर जो total थिला 11 रो only 6 provinces रे bicameralism को include करा गला. Thus the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces were made bicameral consisting of a legislative council and legislative assembly. ताले एतिकी जागा को हमर कोन करा गला ना bicameralism माने कोन पढितले बाय अर्थ 2 हम प्रीवियस क्लास रे पढितले गोटे अपर हाउस गोटे लोअर हाउस. However, many restrictions were placed on them. किंतु बहुत restrictions तांको ऊपर लागू करा गला. Then features number 5. Features number 5 is it reserved a certain number of general seats for the depressed classes. Depressed classes मानंको पई reserved seat हबो बोली 1990 act रे 1919 act हिसाब रे कहा जाइथिला schedule caste मानंको पई जहार हमर लीडर नैथिले बी.आर. आंबेडकर. It also extended the special representation to women and labor. ये आउ कोन extend करा गला 1935 रे extend हे गला ए जो special representation to women and labor workers. Then features number 6 is it abolished the Council of India established by Government of India Act 1858. 1858 Government of India Act 1858 जोटा हम previous class रे पढितले एथरे गोटा बना हेतला council जोटा बना हेतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हिसाब रे काउंसिल ऑफ इंडिया ताको एबोलिश कर दिया गला. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विथ ए टीम ऑफ एडवाइजर. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नियुक्त करा जायतिला तांको गोटे प्रोवाइडेड करा गला टीम ऑफ एडवाइजर. इट एक्सटेंडेड फ्रांचाइजी अबाउट 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट. फ्रांचाइजी रे कोन करा गला ना 14% लोकन को वोटिंग राइट मिलिला. Then number 8, it provided for the establishment of a reserve bank of India to control the currency and credit of a country. Again, this is very important and repeated question. According to which act Reserve Bank of India established to control the currency and credit of the country? Then question number 9, features number 9. It provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces. पब्लिक सर्विस कमिशन सेंटर पाई तयारी हवा पाई तो 1919 रे ही इशू कर दिया जाइथिला. किंतु एठी कोन करा गला 1935 रे कोन एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट करा गला. एठी कहा गला कि ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं बट आल्सो प्रोविंशियल मानक पाई आ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन भी करा जिवो फॉर मोर देन 2 or 2 provinces. Then feature number 10 is it provided for the establishment of a federal court. Again RBI established hela, federal court established hela according to act of 1935. established hela 1937 रे but act थिला 1935 रे. Then it separated Burma जोटा कि वर्तमान हमें कहूछु म्यांमार from India. According to which act Burma is separated from India? This is Government of India Act 1935. Then features number 12, it created 2 new provinces of Odisha and Sindh. Very important for Odisha exams. It created 2, according to Government of India Act 1935, it created 2 new provinces of Odisha and Sindh. Then next feature is it provided for the safeguards to protect the interest of minority. Minority मानकर interest ପାଇଁ को भी safeguard करा जिवो तांकर जो responsibility अछि बा तांकर responsibility नबा ପାଇଁ new schemes आना जिवो. Then features 14, it provided for the establishment of a federal railway authority. Federal railway authority केतेटा काम हैला नै RBI, federal court, federal railway authority to look after the administration of railways. Then features number 15, it provided for the appointment of an auditor general of India. Auditor general of India to audit the accounts of the federation and the provinces. Again important, according to which act Auditor General of India appointment provided? This is according to Act of 1935. Then तापरे आसिला 1935 रो कंप्लीट हे गला 15 टा फीचर्स पढिले. तापरे नेक्स्ट एक्ट आसिला हमर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947.
ए एक्ट हिसाब रे कोन हेतिला ना ऑन फेब्रुआरी 20 1947 डेट मन रखंतु ऑन फेब्रुआरी 20 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेतबेले कोन थिले क्लीमेंट अटली डिक्लेयर कर देले दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30 1948 देखंतु सेतबेले जे प्राइम मिनिस्टर थिले ब्रिटिश रो क्लीमेंट अटली 1947 फेब्रुआरी मासरे से डिक्लेयर कर देले कि जून 30 1948 रे जाई कि हमें इंडिया को कौन कर दबो माने इंडिया वुड एंड बाय इंडिया ऊपर तांको रूल करवाटा एंड हो जिवो जहा परे कि आफ्टर व्हिच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रेस्पोंसिबल इंडियन हैंड्स तापरे समाने कहले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहले हमें ठीक अछि हमें जो पावर ता अछि ताको हमें इंडियन मानको हाथ रे देई दबो. This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. ठीक सही समय मुस्लिम लीग डिमांड कले कि हमें कंट्री रा पार्टीशन चाहूचु. अगेन ऑन जून 3 1947 फेब्रुआरी 20 रे डिक्लेयर हेतिला अगेन तार 2 मास परे 3 मास जून 3 1947 रे the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. तो मैंने कहले जो 1946 रे जो असेंबली फॉर्मेशन हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जदि से माने शामिल हो नाहंती कंट्री तांको पे लागू करा जीवो नाही. On the same day means June 3 1947 Lord Mountbatten सेतेबेलर जे वाइसरॉय थिले viceroy of India put forth the partition plan known as Mountbatten plan. तापरे फाइनली Mountbatten plan देले कि हो ठीक अछि पार्टीशन हे जिवो जो प्लान टाको कुहा गला माउंटबैटन प्लान. The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. ए जो प्लान ता मुस्लिम माने भी एक्सेप्ट कले आउ कांग्रेस भी एक्सेप्ट कला. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947. तापरे कोन हला जेतेबेले माउंटबैटन प्लान आसी गला 1947 रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आसिला. तापर कोन हला ए जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आसिला यार कोन कोन फीचर्स तिला देखिबा. फर्स्ट कथा हला इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये ब्रिटिश रूल को एंड कर देला एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15th अगस्त 1947. Then number 2 it provided for the partition of India and creation of two independent dominions. Finally two dita independent dominions तैयारी हला गोटे पाकिस्तान and other one is our India. Then 3 it abolished the office of viceroy and provided for each dominion a governor general. Again जो viceroy हमर थिले viceroy कहा पई थिले complete India पई थिले किंतु India जेहेतु दीटा पार्ट हे गला टू डोमिनियन हे गला तो ए viceroy को पोस्ट को रिप्लेस कर दिया जाई दुई जगह रे दुई जणा गवर्नर जनरल को नियुक्त करा गला. Who was to be appointed by the British king. अब एमानो को अपॉइंटमेंट किए दला ब्रिटिश king appointment dala on the advice of the Dominion cabinet. His Majesty's government in British was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. Then number 4 कौन थिला it empowered the constituent assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations. तापरे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला कि तमे तो आमे इंडिपेंडेंट करि दिया हला किंतु से माने निज निज पई टू डोमिनियन जो हेइ छने निज निज पई कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन से माने फ्रेम करि परिबे. And to repeal any act the British Parliament including Independence Act itself. आउ जो एक्ट भी चाहिए से माने ताको रिपील बा रिमूव भी करि परिबे. It empowered the Constituent Assembly of both the dominions to legislate both their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. No act of the British Parliament passed after 15th August 1947. 15th August 1947 परे ब्रिटिश मानक तरफ रु कोनोसी एक्ट लागू करा जाई नथिला. Extend to either of the new dominion unless it was extended thereby a law of the legislature of the dominion. Number 6 it abolished the office of the Secretary of State. Secretary of State जो नियुक्त करा जायतिला 1858 रे ताको for India and transferred its function to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. Then number 7 it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas from 15 August 1947.
नंबर 8 इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट इंडिया प्रिंसली स्टेट मानक भी फ्रीडम दे दिया गला कि से माने आइदर डोमिनियन ऑफ इंडिया रे जॉइन करंतु और पाकिस्तान रे जॉइन करंतु और रिमेन इंडिपेंडेंट तांको स्वाधीनता दे दिया गला से माने इंडिपेंडेंट रुहंतु किंबा जाई कि इंडिया संगे मिसंतु किंबा जाई कि पाकिस्तान सहित मिसंतु Then number 9, it provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of India Act 1935. 1935 Act हिसाब रे समाने रहिबे जे पर्यंत ताकर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होई नाही. Dominions were however authorized to make modification in the act किंतु तांको परमिशन बा तांको सत्य की स्वाधीनता दिया हितला कि समाने 1935 जो एक्ट रे कोनोसी भी सुधार करि पारिबे. Then number 10, it deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval. But this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power. कहा को full power दिया गला Governor General कहीं ना viceroy को पोस्ट को कौन कर दिया जितला abolish कर दिया है कि two dominions रे divide कर दिया है Governor General तेणु तांको power दिया गला to assist to any bill in the name of his majesty से माने his majesty नाम रे जे कोनो से bill को assent करि पारिबे. Then आउ कौन फीचर्स थिला it designated the Governor General of India and provincial governors as constitutional heads. से जो कॉन्स्टिट्यूशन रो हेड काहा को करा गला ना गवर्नर जनरल को किंबा से जो प्रोविंसेस जो थिला प्रोविंशियल गवर्नर्स मानन को करा गला. दे वर मेड टू एक्ट on the advice of the respective council से माने केमती काम करिवे ना respective council रो advice रे काम करिवे ministers मानन का advice रे. Then number 12, it dropped the title of emperor of India from the royal titles of king of England. से कोन करा गला तांको ना ड्रॉप कर दिया गला तांको टाइटल टाकू ऑफ एम्पेरर ऑफ इंडिया रु करा गला रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड. Then 13, it discontinued the appointment of civil services and reservation of post by the Secretary of State for India. Secretary of State for India पे जो पोस्ट सब अपॉइंट करा जाउतला से सब को डिस्कंटिन्यू करा गला कोनो से न्यू अपॉइंटमेंट हला नहीं. The members of the civil services appointed before 15 August 1947 जो भी सिविल सर्वेंट अपॉइंट हेतिले बिफोर 15 अगस्त 1947 से माने कंटिन्यू करिवे एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वर एंटाइटल्ड to till that time. Then last रे कोन हला at the stroke of the midnight of 14 August midnight रे 1947 रे British rule finally came to an end and powers was transferred to two new independent dominion. Finally according to जमाने जेमती कहिथिले midnight 14-15 midnight रे कोन हला power to dominions को transfer हे गला ब्रिटिश पाखरो इंडिया और पाकिस्तान को और लॉर्ड माउंटबेटन होचंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया. इंडिया इंडिपेंडेंट हैला परे माने 15 अगस्त 1947 परे फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड माउंटबेटन. एटा भी क्वेश्चन बहुत थरा रिपीट हेची. He swore in जवाहरलाल नेहरू as the first prime minister of independent India. उसे कौन करले ना जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोली स्वर इन करथिले. The Constituent Assembly of India formed in 1946 became the Parliament of the Indian Dominion. तो 1946 रे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करा जायतिला सेकु से हे गला पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन. एही पर एटा थिला हमर हिस्ट्री किछि पॉलिटी माने हम संविधान तयारी हबा पूर्वर किछि घटना जोटा कि करा जायतिला हमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. नेक्स्ट क्लास रे हमें स्टार्ट करिबा चैप्टर 2 जोठी हमें पढ़िबा हम कॉन्स्टिट्यूशन केमिति फ्रेम हेतिला हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे नेबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रो कांसेप्ट एठी हमर चैप्टर 1 टा कंप्लीट हे गला. ठीक अछि जदी हम वीडियो एठी भल लागिला देन लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ यार आंसर ए क्वेश्चन रो आंसर टी जोटा कि व्हेन एंड वेयर द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कमेंट सेक्शन रे आंसर टा दियंतु. आज बाय एतिकी थैंक यू.